आपने बताया कि आप बुक लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैंने बुक ये BSF Eyes and Ears तो लिखी है about 3 years ago it was completed. You know, the idea was given to me by an officer called SS Mund. He is now DIG in somewhere in Jammu sector. He was undergoing defense studies post graduation at Punjabi University, Patiala. Is it Punjabi or Punjab? Punjabi. Punjabi. So even prior to that, since I was with training and I had compiled a volume of border management practices while commanding the tactical wing of BSF Academy. So that still is being used as a reference material, although it needs a heavy review. A lot of things have changed since I wrote it 22 years ago. It continues. So this also shows the lack of inertia in our organization कि एक चीज जो बन गई है उसको रिव्यू करके अपग्रेड तो करें, but 22 years it has not been done. 2002 it was, 2003 it was finalized. Anyway, so he had an idea that I had written that, and I was an instructor. He recommended to me that I attempt a book on borders. So धीरे धीरे फिर idea crystallize हुए. He referred me to the HOD of Defense Studies Department at Punjabi University and one of his research students. So we thought of the concept. क्या करें? पहले it was all borders. Then when I said that I do not have knowledge about others' borders, deeper knowledge. So then we restricted it to the borders managed by BSF and how the BSF has evolved, how the border management concepts have evolved in India, and what has been the role of the organization in augmenting the war efforts, in internal security, and in assisting outside the world, in say in UN, and what are the challenges that we face. So this is how the book is structured, and this was completed about 2-3 years ago. And, so this is how presently I am involved in translating this book into Hindi for wider audience, because this is in English. So it was felt that although the book is doing well in the market, but if it is translated in Hindi, it will be more acceptable. So this is ओके. तो बुक राइटिंग का मुझे बेसिक्स जानना है. मुझे लोगों ने पूछा है कि अगर हम बुक लिखना चाहते हैं तो कैसे प्रोसीड करना चाहिए. Firstly, one has to think of what one wants to highlight. I mean, in my case, this book writing happened accidentally, I must say. But the process that I can think of is one has to be clear on what he wants to bring out in the book. Then he has to structure his thoughts into various groupings, which you may call chapters, and then elaborate on that. Elaborate ho gaye, then it has to and also research on those subjects. Then once you have completed the draft, it goes to the editor, who looks for plagiarization and grammatical errors, structuring errors, who are expert editors. So then they edit it, here final shape, and then it goes on for public. I mean, I am not too sure about the process. मैंने तो बस लिख दी because somebody said, and I had a fixed agenda, so it wasn't very difficult. But और तरह की कोई बुक लिखनी हो या नॉवल लिखना हो या बायोग्राफी लिखनी हो, तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉलोड. तो इसमें जो आपको खर्चा होता है वो कहाँ होता है? एक तो आप
एडिटर को देते हैं, फिर पब्लिशर को भी देते हैं? नहीं, हम नहीं देते हैं। In this case, since it was through the HOD and the research scholar, they contacted a publisher. So publisher said okay. He got convinced of the project theme, and then he published it. We had spent no money. He has spent the money, and he gets his money back through the sale of these books. थोड़ी बहुत रॉयल्टी हमें दे देते हैं, थोड़ी बहुत, अभी नॉट मच। तो एक बार अगर आइडिया के लिए तो एक बुक का प्राइस होता है लगभग कितना % आप तक वापस आता है? I have no idea. He has given me, I have not bothered. He has given me very limited amount. इसका जैसे अभी तो बढ़ के शायद 1000 के आसपास हो गए। Originally it was priced about 799 or something. Must have sold about 2000 copies. थोड़ा सा ही आया है। 2000 copies means how much? कितना पैसा हो गया? 20 लाख, है ना? 20 लाख के सेल हुई होगी। यो एक अगर 1000 की है तो 100 हो गई 1 लाख की, 2000 कॉपी होगी 20 लाख की। 20 लाख में तो मुझे तो बहुत लिमिटेड अमाउंट आया, नॉट इवन 1%, बट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं आई थिंक इट इज 5% और 10% जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है। आई हैवंट रियली बॉदर्ड। तो बिना पब्लिशर और बिना एडिटर के भी कोई कर सकता है? एडिटर भी उसी ने एंगेज किया था। पब्लिक अपने आप खुद से फाइनेंस करके पब्लिश भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्रांसलेशन वर्जन जो है वो अवेलेबल कब हो रहा है? टाइम लगेगा। आई हैव एक्चुअली प्रॉब्लम विद ट्रांसलेटर्स इज दैट they are very lazy. The translators nowadays have become very lazy. I tried to get it the publisher tried to get it translated by an expert translator. उसने अपने ही elements उसमें introduce कर दिए। Then the book being technical words की translation अगर वो कर देते हैं तो उनकी meaning बदली हो जाती है। So he had translated. I tried to rectify one chapter of that translation. I found it very tedious. So फिर we had started doing it a couple of years ago. So that got shelved. And that translator was very, I wouldn't say arrogant, but he thought very highly of himself. And he in fact thought that he is the author of the book. But he is not the author, he is only a translator. So he was very reluctant if his translation was corrected. हिंदी के वो एक्सपर्ट भी थे, तो वो उनको ये भी बुरा लग रहा था कि मेरी हिंदी को कैसे करें। But this is something which our people need to read. अगर आप उसमें बहुत कठिन वर्ड्स डाल देंगे तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। एक तो टेक्निकल है मामला, दूसरे कठिन वर्ड्स डाल दिए तो समझ में नहीं। सो द प्रेजेंट ट्रांसलेटर जो उन्होंने एंगेज किया है, माई फीलिंग इज दैट दैट ट्रांसलेटर इज मेनली ट्रांसलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ गूगल। तो उसकी वजह से सेंटेंस फॉर्मेशन में ही ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ, अभी तक उन्होंने 2 चैप्टर्स ट्रांसलेट किए, उनके ऊपर 2 चैप्टर्स के ऊपर मैंने कम से कम 10-10 दिन लगा के उनको एडिटिंग करी है, उनको थोड़ा सा मेरे दिमाग में लाया है। तो आई हैड फर्स्ट मीटिंग विद दैट ट्रांसलेटर समटाइम्स अर्ली लास्ट मंथ। आज 40-45 दिन हुए हैं, अभी 2 चैप्टर्स कह सकते हैं ट्रांसलेट ठीक से हुए। तो इसमें चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहे आप? नहीं, वो नहीं यूज कर रहे। चैट जीपीटी में भी तो
ह्यूमन इनपुट्स तो जरूरी है ना। चैट जीपीटी इज प्रोग्राम्ड, वो भी गूगल की तरह ही ट्रांसलेट करेगा। वी डोंट वांट दैट ना। वो अब जैसे उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड है, गूगल ने कहीं उसको तिजोरी लिख दिया, तो वो उन्होंने ट्रांसलेशन में तिजोरी वर्ड लिख दिया। अब तिजोरी का क्या मतलब है? तो फिर उसको उनका पढ़ा, अंग्रेजी का पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट समझा, एंड देन ट्रांसलेटर्स डोंट रियलाइज दैट ईच सेंटेंस नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड। जो उस पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ के अपनी भाषा में लिखना भी ट्रांसलेशन है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है ना। तो मुझे ये लगता है कि आजकल के ट्रांसलेटर्स, आजकल के क्या, मेरा तो यही पहला एक्सपीरियंस है, पहले भी ऐसे ही होगा, दे आर नॉट लुकिंग इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैटर एंड किसी तरह की आउटसाइड हेल्प लेके ट्रांसलेट। सो इनफैक्ट लिखने से ज्यादा एफर्ट ट्रांसलेशन में लग रहा है। इसका ऑडियो वर्जन नहीं आ रहा, सोचा है इसके बारे में कभी आपने? ये तो नहीं सोचा मैंने अभी। एक वो कुछ एप्स भी हैं जो एनसीईआरटीज या जो भी बुक्स होती थी उसका ऑडियो वर्जन निकालती हैं। अच्छा। तो ताकि अगर मैं कहीं भी खड़ा हूँ, बैठा हूँ, तो मैं सिर्फ ईयरपॉड्स लगाऊं और सुन लूँ कि पूरी बुक की रीडिंग है सिर्फ। ओके, मैं बात करूंगा पब्लिशर से, कॉपीराइट के वो ना हो इसमें इश्यूज, है ना, तो वो बात करूंगा। गुड आइडिया। तो आपसे इतने सारे टॉपिक्स पर बात करके बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दी आपने। आई होप दिस टाइम हम थोड़ा जस्टिस कर पाएंगे इस कंटेंट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।